Yeah. One world, one ride. Good morning guys, this is Devashish. I hope you enjoyed the drone shots. Super drone udai, and now back to Bengaluru. Bikes are doing good. Raja. Hello. होएगा कनेक्ट हुआ. हाँ चलो चलो. जय श्री राम. जय श्री राम. आजा. अब इन लोग गए किधर? आगे हाँ, इन लोग इधर खड़े हैं सब लोग. हाँ अच्छा, बिल पेमेंट चल रहा है. गुड. कह रहे गरीबों का माल लिया. अरे क्या कर लेगा तेरा यार. वो बैंगलोर पहुंचते वो खोलेगा तो उधर डबा. श्रीनी बुला रहा. हाँ श्री क्या रहा. अरे हाँ. अरे एकदम पप्पी ले लेंगे उसकी यार. एक पूरे मिठाई का डब्बा है. उसको खोल है पूरा खाने को लगाने का. अरे हुबली का मिठाई है, कितना टेस्टी है साला. मेरा पेट बढ़ गया उसके चक्कर में खा के. मेरा पेट बढ़ने का कारण वो हुबली के सब्सक्राइबर लोग ऐसा दवा के मिठाई दिए और मैं भिखारी की तरह खा रहा हूँ कब से. मेरा लेफ्ट है. हाँ अरे बाबा खड़ा रह के जाना यार. क्या कसम से की. हाँ. इधर आएगा ना वो मट्टी वाला. नहीं आ रहा है. आगे है वो मट्टी वाला. आगे. एक केले का झाड़ आना मस्त है यार. पेपर है देखो लेफ्ट साइड में पूरा पेपर छोड़ा है. हाँ पूरा पेपर. हाँ लंबे झाड़ पे पत्ता है ना. अरे जाफर भी है उधर मस्त. हाँ लेफ्ट साइड में है पूरा पेपर का. पेपर प्लाई है ये पूरा चल रहा है ना. पेपर प्लांटेशन है ये पेपर. तभी इधर में भी बहुत है ये.
पेपर, हाँ कॉफी और पेपर। उंगली करके बंदर दिखा रहा था क्या? हाँ। ये हमारा सामने वाला सैम। हाँ खटिया कैसे लेके जा रहा है ना? ये आगे चले गया, कौन है अपना कैलाश? हाँ अरे ये तो बहुत सही है। आगे कैसा खटिया लेके जा रहा था ना? And the 70 hairpin bends ends. Good job. सही है बाबा, well done, well done. Hey, love you. किधर है? पहले पिच के आओ. चल आगे जा, आगे जा, आगे जा. So this was the last of the 70 up and 70 down. And on our way to Bangalore. क्या बात है यार, क्या बात है. हाँ. चल चल आगे चले. हाँ ठीक है ठीक है, चलो. वाह, थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच. अच्छा इसके लिए आगे जाओ क्या? और भी अपना एरिया में आते तो थोड़ा रिवर्स से आने का ना. चल आ जा आगे, आ जा. आ रहा हूँ, आ रहा हूँ. आ जा आगे. अरे वाह, चले. सही है. थोड़ा रोड पे जंप करेगा ना. अरे वाह. चलो एक मिनट. आ गया. बाप रे.
पहली बार लेके आ रहा हूँ मैं गाड़ी मेरा इधर. हाँ क्या? वो भी विथ यू. दिस इज कमिंग हियर फर्स्ट टाइम विथ यू. अरे वाह. अरे मैं इधर आया अरे पहला. I've come here before. But this house was not. Some attitude, some horses have attitude. Some of them do. Yeah, you try to, But is it specific to a breed or something? No, any horse can become slow. Okay. मतलब मूड खराब होगा तो गांड नहीं मार देगा. तो मूड में लाना चाहिए. मूड खराब होने देना नहीं चाहिए. थोड़ा पसंद नहीं करना चाहिए. पहला समझा के करके चलेगा तो. Hi, how are you? No. ये टेंट है थोड़ा ये Bus, Aryan, and approach the jump straight. You went in a very cross way and all and went. How do you get him to walk? Yeah. Just take time, do one more jump and then. What do they have to do to make come him from walk? the right lead now? Yeah. What do they have to do to make the horse walk? There is certain amount of aid that you need to give, like the rein control and the leg. It's all between your leg and the seat. Okay. So the moment you Push it down. give those commands, the horse understands. I have to remove the left leg. Okay. So it has to kind of in the correct lead. When it's going in a circle, left circle, the left leg, comes out. Okay. And those things only when you ride now you come to know. For us, like if you say the layman is just walking or running. Okay guys, so we are at Vinayak's farm and he runs a horse riding training academy. What you saw, and how long have you been training, Vinayak? With horses, it's been like more than 3 years, 3-4 years. Yeah. 3 years. Yeah. And how do you think about a difference between motorcycling and horse riding? There's not much of a difference. Basically, the principles, the basic things are almost the same. Though you may think that motorcycle is like a not a living thing, but then you have to be emotionally connected. Like how you're connected with the horse, you need to be connected with the motorcycle the same way. That's what I thought. I mean, that's what I discovered when I finished this ride. This is my first ride to Kolli Hills. So it's almost the same. The same. You have to take care of the horse. The more you take care of your bike, the more you take care of your horse. It will not let you down. It always, you understand. So right said. Very good, very good. I'm so proud of you. So anyone who wants to learn horse riding, you can definitely come here. Okay, I'll give the description below. It's in Bangalore. Bombay से भी आने का तो आओ, कोई problem नहीं. But yeah, for Bangalore guys. और किधर से आता तेरे इधर? Mostly all यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते हैं. एंड आफ्टर दैट कुछ लोग आते हैं छुट्टियों पे. दे कम फ्रॉम बॉम्बे ऑल्सो, दे कम फ्रॉम तमिलनाडु, दे कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश.
So around from whoever comes here, कभी आते हैं तो they come to meet their parents, relatives. So they come and spend time at their grandmother's house, grandparents' house. So that time they enroll for a weekend crash course of 10 classes, or they take a 15-day class course, and then they just get the basics. And they after that, the idea is even after that they go to their own place, and then they can always pursue. The idea is to get the riding bug kick you. Right. That is the whole concept, so that the equestrian sport gets more of Okay, horse riding, motorcycle riding. ये भी motorcycle riding. So to all the lovely few people who are watching this video, stay blessed, and I'm going to end the vlog here. And adios. I hope you like the video. Bye. One world, one ride. आम्हा काय म्हणता तुम्ही? मुंबई माहित नाही रे. माहित नाही मला. हा अरे सबस्क्रायबर नाही, ऐसा राइडर बोल.